So very good evening all the participants. Today let us start with the liquidation process. Now what liquidation process is? There are three situations in which liquidation can take place, which are envisaged in section 33. First situation, order of the adjudicating authority on its own without any application by anybody. What it says, where the adjudicating authority before the expiry of the insolvency resolution process period or the maximum period permitted for completion of CIRP under section 12 or the fast track, as the case may be, does not receive a resolution plan. So first is no resolution plan was received, or second is rejects the resolution plan for the non-compliance of the requirements specified therein. So these are the two situations in which they will pass the liquidation order, the adjudicating authority. Period has expired and nobody came with a resolution plan. So then the adjudicating authority may pass a liquidation order and issue a public announcement, require such order to be sent to the authority with which the corporate debtor is registered. So this is section 33. Now, second situation. Second situation is at the behest of the RP. The first situation is by the adjudicating authority on its own. No resolution plan received, time period over, they may issue liquidation. Second is where the RP at any time during CIRP, but before confirmation of resolution plan, intimates the adjudicating authority of the decision of COC, approved by not less than 66% of the voting share to liquidate the corporate debtor. Now, second situation is there is no confirmation of a resolution plan and COC decides to liquidate. So then the RP will make the application and the adjudicating authority shall pass the liquidation order. This is the second situation. Okay. For the purpose of this subsection, it is hereby declared that the committee of creditors may take the decision to liquidate the corporate debtor any time after its constitution and before confirmation of the resolution plan, including at any time before the preparation of the information memorandum. So we have read the provisions regarding information memorandum, and it is not necessary that in every case information memorandum should be prepared. Suppose the COC feels that okay, there are no assets in the company, so there is no point in continuing with CIRP because CIRP also entails cost. So as we just discussed, the RP will be charging his fees, say, on a monthly basis. Right? So in this case, what is the point in continuing with CIRP when there are no assets in the company? So who will be the resolution applicant in such a scenario? So they may decide with 66% majority, let us liquidate this company. So this is the second situation. Now, if they ask you whether IRP can recommend liquidation, Pradeep ji, whether IRP can recommend liquidation? No, sir. No, because only COC can recommend. COC, yeah. So IRP on its own cannot recommend liquidation. Sir, can I add into this? Yes. IRP can suggest or can put forward. Actually, this decision will be taken only after the constitution of the COC. Okay. And when constitution of COC takes place, our IRP is elevated as RP. Okay. So that is why deliberately the term IRP here has been used. Okay. So if they ask IRP, no. Answer is straight no. Now third situation. A resolution plan approved, but it is contravened. It is contravened by the concerned corporate debtor, then any person other than the corporate debtor. Suppose it was contravened by the CD, then any person, the person who contravened, he cannot take advantage of his own folly. So naturally, he will not be allowed to go for liquidation. So any person other than the corporate debtor whose interests are prejudicially affected by such contravention may make an application to the adjudicating authority for a liquidation order. So 33(1), liquidation order by the adjudicating authority on its own. 33(2),
decision of COC to liquidate. Third, contravention of resolution plan and the application by any other person other than the corporate debtor. ठीक है? So these are the three situations. Now 33.4. On receipt of an application under subsection 3, if the adjudicating authority determines that the corporate debtor has contravened the provisions of the resolution plan, it shall pass a liquidation order. So there could be a situation where a resolution plan was approved. It was admitted also by the adjudicating authority, but later on there was a contravention. And in that case, any person other than the corporate debtor whose interests are prejudicially affected, he may make an application and the adjudicating authority will determine that okay, there is an actual contravention, and then they will go in for liquidation. So these are the three scenarios. I hope this up to this point we are clear. Pradeep ji, are we clear up to Yes. this? Yes. अजय जायसवाल जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. No, sir. No, sir. चलिए, now point number 5, 33.5. 33.5 is very important. It says subject to section 52. Now what is the meaning? The meaning is section 52 talks of the rights of secured creditor. We have read section 14 also. So section 14 talks of moratorium, and section 14 says that during moratorium, even no action can be taken under SARFAESI. But here, during liquidation, secured creditor is at liberty. So that is why this 33.5 is something similar to moratorium provisions of section 14, except regarding the rights of secured creditor. So it says, subject to section 52, when a liquidation order has been passed, no suit or other legal proceeding shall be instituted by or against the corporate debtor. It is talking of institution. So it means there is no bar on continuance of proceedings. So if the proceedings which were continuing prior to CIRP, they can be resumed during liquidation. Okay? Provided that a suit or other legal proceeding may be instituted by the liquidator. Now suppose the liquidator wants to institute proceedings. So then in case it has to be with the approval of the adjudicating authority. Okay? The provisions of subsection 5 shall not apply to legal proceedings in relation to such transactions as may be notified by the central government. Very important section 33.7. 33.7 says that the order for liquidation under this section shall be deemed to be a notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporate debtor. Now this word officers, it also has a definition as per Companies Act. So it is deemed to be a notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporate debtor, except when the business of the corporate debtor is continued during the liquidation process by the liquidator. So in CIRP, there is no such notice of discharge during CIRP, but during CIRP also, RP may ask certain employees to leave the company, because say maybe company may be saddled with so many employees, maybe 100 employees are working but only 50 are needed. So that decision can be taken by RP during CIRP also. So if they ask you a question whether RP can terminate the services, the answer is yes. During CIRP also, he can take any action in order to keep it as a going concern. But during liquidation, unless the business of the corporate debtor is continued as a going concern, so it is deemed to be a notice of discharge, and no separate notice. Say to the employees also, no separate notice for termination of their services is required. The liquidation order itself is deemed to be a notice of discharge. ठीक? सर एक मर्तबा 0.5 देखेंगे सर. हाँ, 0.5, yes. सर वहाँ ये बता रहे ना, ये provided that a suit or other legal procedure may be instituted by the liquidator himself, which will be on behalf of the corporate debtor. Yes. Actually, So, the point is, suppose there is some recovery due from a company. Now this company is into liquidation. Now the liquidator wants to sue that company for recovery. Yes, so sir. For that, he has to take the approval of the adjudicating authority. Yes, sir. And if we go to regulations,
So they in regulations they say there has to be economic rationale also for Yes. pursuing the proceedings. So as soon as we will see the regulations, so we will see that point also. Yes, sir. I think up to 33 it is clear. Now 34. 34 says appointment of liquidator and fees to be paid. Now it says where the adjudicating authority passes an order for liquidation of the corporate debtor, the resolution appointed for the CIRP or for prepack shall subject to, so first thing that he has to give a written consent because it is now a fresh assignment. Okay? It's not that simply because he was acting as RP, he can simply be elevated as liquidator. First of all, he has to give a written consent because he may or may not be interested in continuing as liquidator. This is the first point. Okay? Shall act as the liquidator for the purpose of liquidation unless replaced by the adjudicating authority. Now, there he could be replaced by the adjudicating authority if the resolution plan which was submitted by before the adjudicating authority, so that was rejected. So in that case, the adjudicating authority may replace him. On the appointment of a liquidator under this section, all powers of the board of directors, key managerial personnel, and the partners of the corporate debtor, as the case may be, shall cease to have effect and shall be vested in the liquidator. So it says, so there is a difference. In CIRP, powers were suspended, but now the powers shall cease to have effect and shall be vested in the liquidator. Now the liquidator is acting in a fiduciary capacity. The personnel of the corporate debtor shall extend. So wherever I need to place emphasis, I have marked it in red. The personnel of the corporate debtor shall extend. So it is obligatory upon them to extend all assistance and cooperation to the liquidator as may be required by him in managing the affairs of the corporate debtor, and provisions of section 19 shall apply because section 19 is in CIRP. Liquidation starts with section 33. But section 19 is equally applicable in case of liquidation also. Okay? In relation to voluntary liquidation as they apply in relation to liquidation with the substitution of reference to the liquidator for reference to the IRP. Now 34 subsection 4. The adjudicating authority shall by order replace the RP. Now what are the conditions for replacement? Number 1. The resolution plan submitted by the RP was rejected for failure to meet the requirements. Because whenever the RP is putting forth the resolution plan for approval by the COC, he has to ensure that it complies with the conditions which are given in section 30 subsection 2. Primarily the conditions are liquidation value to operational creditors, liquidation value to dissenting financial creditors, feasibility, practical no non-violation of any law, etc., etc. So these are the conditions he has to satisfy. Now suppose it was rejected because it did not meet the requirements. So then in that case, the adjudicating authority shall by order replace the RP. Second is board recommends the replacement of RP for reasons to be recorded in writing. Maybe board got a complaint or something of that sort. So in that situation also, they may replace it. Or the resolution professional fails to submit a written consent. So these are the 3 situations in which RP may be replaced. For the purposes of clause A and C of subsection 4, the adjudicating authority may direct the board to propose the name of another insolvency professional to be appointed as liquidator. Okay. The board shall propose the name of another insolvency professional along with written consent from the insolvency professional in the specified form within 10 days of the direction issued by the adjudicating authority. Normally, the period available with the board to revert to the adjudicating authority is 10 days. Normally, except in one situation, which I think is given in section 97. So in individual insolvency, which we'll read later. Normally, the board has to revert within a period of 10 days. The adjudicating authority shall, on receipt of the proposal of the board for the appointment of an insolvency professional as a liquidator, by an order, appoint such insolvency professional as the liquidator. So appointing authority is the adjudicating authority. An insolvency professional proposed to be appointed as a liquidator shall charge such fees for the conduct of the liquidation proceedings and in such proportion
to the value of the liquidation estate assets as may be specified by the board. Now regarding the fees, this fees may be the fees which he was charging as RP. Second is, he may suggest a monthly fees. And third point is that he may claim it based on the chart which is given, based on the realization or distribution. So there could be different types of, different manner of charging fees by the liquidator, about which we will read in detail in regulations. The fees for the conduct of the liquidation proceedings shall be paid to the liquidator from the proceeds of the liquidation estate under section 53. Okay. Now section 35. Section 35 talks of the powers and duties of liquidator. Let us quickly see the fees chart also. So fees chart is given in regulation 2A, 2B, 3 and 4. So let us have a quick look at the fees also. Liquidator fees, yes. So first thing is, it is given at regulation 4. The fees payable to the liquidator shall be in accordance with the decision taken by the COC. When the COC in its final meeting, they may ask that if the RP is appointed as a liquidator, what fees he will be charging. So this is the first type of fees. Second is, where no fixed was fees. So consultation committee. Consultation committee is a committee similar to committee of creditors, which is formed during liquidation process. So consultation committee consists of various stakeholders. It may fix the fees. Third is, in case it is not fixed, then this is the percentage. This is the percentage chart based on which the fees may be charged. Now let us again go back to section 35. So section 34 we have covered. Now let us say section 35. Section 35 talks of the powers of the liquidator. Yes, powers and duties of liquidator. Subject to the directions of the adjudicating authority, the liquidator shall have the following powers and duties. Now, please note that these powers and duties are subject to the directions of the adjudicating authority. There is no such qualification in respect of the duties and powers of resolution personnel. So, if we see similar section in CIRP, whether they have qualified it, I don't think so. Let us see the duties of resolution personnel, which are given in section 25. So there is no such qualification. But in case of liquidation, it says subject to the directions of the adjudicating authority. What is the meaning? The meaning is that whenever he wants to take any action, he has to seek the directions of the adjudicating authority, particularly for the institution of proceedings, etc., etc. Subject to the directions of the adjudicating authority, he doesn't have unfettered powers. The liquidator shall have the following powers and duties. First is to verify the claims of all the creditors, to take into his custody or control all the assets, property, effects, and actionable claims of the corporate debtor, to evaluate the assets and property of the corporate debtor in the manner as may be specified by the board, and prepare a report. Now, regarding verification of claims, so Pradeep ji, please tell me, suppose claims were received during CIRP also, but since Yeah, CIRP was not successful, now the company has come into liquidation. liquidation. Yes. So, whether the claims which were submitted during CIRP, whether they can be taken as it is? Yes, sir. They can be Yes, sir. taken, Yes, but yes, they sir. must be evaluated, sir. Yes. So, it is given in regulations. So, what the regulation says, if we go to the liquidation regulations, then it talks of the such scenario. What it says? Yes. So public announcement, in case of public announcement, 30 days time window is given, and it says
if we go to regulation number 12, 12(2)(c), 12(2)(c) says, provide that where a stakeholder does not submit its claims during liquidation process. So there could be a situation where the stakeholder submitted his claim during CIRP, but he did not submit his claim during liquidation. Maybe he has gone abroad, or maybe he is not well, maybe anything, maybe he ignored the public announcement. The claims submitted by such a stakeholder and duly collated by the IRP or RP, as the case may be, during CIRP shall be deemed to be submitted under section 38. So it says there is a deeming fiction that whatever the claim is submitted during CIRP, that can be deemed to be submitted under section 38. But sir, in general, the creator is supposed to file again the claim. Yes. There is a public announcement because even their claims might be different. Suppose this loan was given by a bank to this company. Now interest has also accrued during CIRP period. So we will include that much interest also. So to that extent, maybe his claim stands increased. But this is a situation which is being given that, okay, in case he doesn't submit, then what will happen? Then CIRP claim may be admitted. This is the point. Yes. To take into his custody or control all the assets, property, effects, and actionable claims of the corporate debtor. To evaluate the assets. The wording used here is in point number 8 to verify. But in CIRP, they say to admit and collate. Here, the powers of the liquidator are increased. They may reject also. Liquidator may reject the claims also. But RP cannot reject the claims. He will simultaneously maintain two records, claims submitted, claims admitted. But here, he has the power to reject the claims also. To take into his custody or control all the assets, property, effects, and actionable claims. To evaluate the assets and property of the corporate debtor in the manner as may be specified. To take such measures to protect and preserve the assets and properties. To carry on the business of the corporate debtor for its beneficial liquidation as he considers necessary. Now the point is that he is not increasing the scope. He can carry on the business for its beneficial liquidation. Suppose there are 4 product lines, so he cannot say that, okay, I will introduce a new product line. Only that much carrying on of business which is required for its beneficial liquidation as he considers necessary. Okay? Subject to section 52, to sell the immovable. This is again made subject to section 52. So section 52 talks of the rights of secured creditors. So secured creditors during liquidation, they are at a different footing. Subject to section 52, to sell the immovable and movable property and actionable claims of the corporate debtor in liquidation by public auction or private contract, with power to transfer such property to any person or body corporate, or to sell the same in parcels in such manner as may be specified. Provided that the liquidator shall not sell the immovable and movable property or actionable claims of the corporate debtor in liquidation to any person who is not eligible to be a resolution applicant. So he cannot sell the properties to any person who is ineligible under 29A. To draw, accept, make and endorse any negotiable instruments. To take out in his official name letter of administration to any deceased contributory. Now the point is, suppose there are some unpaid calls. 500 rupees was the share value, only 50 has been called up. Now the liquidator has the power to call the balance 50 rupees. And suppose a shareholder has died, then what he will do? He will take out a letter of administration. Okay? And he can recover this amount from the legal representative. This is the meaning. To obtain any professional assistance from any person or appoint any professional. Now there is a difference. First is to obtain any professional assistance. That means he can appoint a freelancer. He can appoint a consultant. Or he can make appointment. He can appoint any regular employee also. So appointment and to obtaining any professional assistance. He can do both things.
in discharge of his duties, obligations, and responsibilities. So these are the duties and rights, powers, and duties of the liquidator. To invite and settle claims of creditors and claimants and distribute proceeds in accordance with the provisions of the code. So this thing he can do. Just a minute. To institute or defend any suit, prosecution or other legal proceeding, civil or criminal, in the name of or on behalf of the corporate debtor. Okay. Suppose a suit has been instituted against the corporate debtor, so he can defend it. Okay. To investigate the financial affairs of the corporate debtor, to determine undervalued or preferential transactions. To take all such actions, steps, or to sign, execute, and verify any paper, deed, receipt, document, application, because he is acting on behalf of the company. The powers have ceased. Powers of the board of directors have ceased. है ना? So now he is all in all. So he will be discharging the duties, but on behalf of the corporate debtor, because the corporate debtor continues to exist. है ना? अभी dissolution नहीं हुआ, liquidation हुआ है. To apply to the adjudicating authority for such orders or directions as may be necessary for the liquidation of the corporate debtor, and to report the progress of the liquidation process in a manner as may be specified by the board. To perform such other functions as may be specified by the board, the liquidator shall have the power to consult any of the stakeholders entitled to a distribution of proceeds under section 53. So he can consult them, provided that any such consultation shall not be binding on the liquidator. Provided further that the records of any such consultation shall be made available to all other stakeholders not so consulted in a manner specified by the board. That means, the meaning is that if he consults the stakeholder and the advice of the stakeholder does not match with the opinion of the liquidator, then he will make a proof of all these things. He will make a record of all these consultations, and they shall be made available to all the stakeholders not so concerned. Now 36, liquidation estate. For the purpose of liquidation, the liquidator shall form an estate of the assets mentioned in subsection 3, which will be called the liquidation estate in relation to the corporate debt. Because if we see section 53 talks of the waterfall mechanism, you know, the order in which payment shall be made to the various stakeholders, and that talks of the liquidation estate. Even the liquidator's fees can be paid only out of the liquidation estate. The liquidator shall hold the liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors. So they ask question, the liquidator shall hold the liquidation estate as a fiduciary, trustee, etc., etc. So the answer is fiduciary. And similarly for the benefit of dash, all the creditors, secured creditors, unsecured creditors. So it is for the benefit of all the creditors. Yes. Normally they ask a question on this. Subject to subsection 4, the liquidation estate shall comprise all liquidation estate assets, which shall include the following. Any assets over which the corporate debtor has ownership right. Now the simple point here is that the liquidation, what the liquidation estate will contain? Liquidation estate will contain whatever belongs to the corporate debtor. Okay? And whatever does not belong to the corporate debtor, that will not be included in the liquidation estate. Particularly, suppose the company has deducted some money on account of PF, pension fund or gratuity fund. So then that money does not belong to the company. It belongs to the workman. So particularly, it shall not be included in the liquidation. All sums due to any workman or employee from the provident fund, pension fund, and gratuity fund. So whatever assets belong to the company, whether or not they are in the possession of the company or in the ownership of the company, they shall be included in the liquidation estate. But assets held in trust for any third party, bailment contracts, all sums due to any workman, etc. So suppose there is some right to use only, so then it will not be included. Okay. Assets in security collateral held by financial service providers and are subject to netting and set off in
multilateral trading or clearing transactions. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि suppose the company is having a demat account. So for operating the demat account, the company has given 20 lakhs as security. Now 10 lakhs is due from the company on account of transactions. So only 10 lakhs will be included in the liquidation estate, subject to netting. ठीक है? Personal assets of any shareholder or partner, as the case may be, provided such assets are not held on account of avoidance transactions, so they will not be included. ठीक है? Assets of any Indian or foreign subsidiary of the corporate debtor will not be included. ठीक है? चलो, तो 36 is also clear. 36 में liquidation estate में the assets which belong to the corporate debtor will be included in the liquidation estate. ठीक है? Now powers of liquidator to access information. Section 37. Now the liquidator has to make payment to the various stakeholders. So he shall have the power to access any information system, maybe with information utility, maybe with credit information, maybe an agency say income tax, GST, etc. है ना? तो उनसे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह ही कैन टेक एंड ही कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन. ठीक है? ये now the creditor may require the liquidator to provide them any financial information relating to the corporate debtor in such manner as may be specified, and the liquidator shall provide information to such creditor who have requested for such information within a period of 7 days. ठीक है? Now section 38. Section 38 talks of consolidation of claims. The liquidator shall receive or collect the claims of creditors within a period of 30 days. In CIRP, period is 14 days. In liquidation period is 30 days. A financial creditor. Now the point is, suppose a claim is received after 30 days, then what will happen? है ना? There is no clear-cut guidelines here. A financial creditor may submit a claim to the liquidator by providing a record of such claim with an information utility. ठीक है? Provided that where the information relating to the claim is not recorded in the information utility, so then they may submit in any other, on the basis of any other documents. ठीक है? चलिए. Another important thing is that the creditor may withdraw or vary his claim under this section within 14 days of its submission. तो ये अपना क्लेम को विड्रॉ भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है. ठीक है? Now section 39. Section 39, very important section, which talks of the verification of claims. The liquidator shall verify the claims submitted under section 38 within such time as may be specified. Verification कितने टाइम में करना है? रेगुलेशन 30, रेगुलेशन 30A. एक बार देख लेते हैं. ये हमारा है रेगुलेशन 30. तो कितने दिन में करना है? वेरिफिकेशन 30 डेज में. ठीक है? रिसीट के लिए 30 डेज और वेरिफिकेशन के लिए भी कितना? 30 डेज. And he may either admit or reject the claim in whole or in part, provided that the liquidator shall also verify the claims collated during CIRP but not submitted during liquidation within 30 days from the last date for receipt of claims during liquidation, and may either admit or reject the claim in whole or in part. ठीक है? So there could be a situation where a person submitted a claim during CIRP but it did not submit a claim during liquidation, so then that claim also has to be verified during liquidation. ठीक है? ये हो गया हमारा 30. Verification of claims. The liquidator may require any creditor, ठीक है, or the corporate debtor or any other person to produce any other document or evidence which he thinks necessary for the purpose of verifying. ठीक है? तो किसी से भी वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है. किससे? क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर और एनी अदर पर्सन. एनी अदर पर्सन में कौन इंक्लूड हो सकता है प्रदीप जी?
क्रेडिटर तो ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन भी Yeah. ठीक है, एनी अदर पर्सन कौन हो सकता? सपोज क्रेडिटर है सबमिटेड अ क्लेम, ठीक है, और उस क्रेडिटर के ऑडिटर से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है वो। Okay. अपना ऑडिटर है, उससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है ना? जो भी उसको लगता है कि भाई सी में भी हैविंग इंफॉर्मेशन, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, बैंकर हो सकता है। सेक्शन 40, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स। यहां पर रिजेक्शन का पावर है। इन केस ऑफ CIRP देयर इज नो सच पावर ऑफ रिजेक्शन। द लिक्विडेटर मे, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स अंडर सेक्शन 39, either admit or reject the claim in whole or in part as the case may be, provided that where the liquidator rejects a claim, he shall record reasons in writing for such rejection. ठीक है? The liquidator shall communicate his decision of admission or rejection of claims to the creditor and the corporate debtor within 7 days of such admission or rejection of claims. ठीक है? दोनों चीजें कम्युनिकेट करनी है, एडमिशन पे भी कम्युनिकेट करना है और रिजेक्शन पे भी करना है। किसको करना है? क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट Yes. डेटर, ठीक है, विद इन 7 days। So is it extendable? Because in maybe there may be no instances where there be hundreds of crores of claims. Actually, CIRP 7 has to be filed whenever there is any delay, and for any delay, he has to approach the adjudicating authority. In case of liquidation, there is a concept of quarterly progress reports also. अभी तो Okay. वहां पर भी आ गया, CIRP में भी आ गया है, बट इन लिक्विडेशन पहले से ही था। तो इन क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ही इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स। सेक्शन 41, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स। वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स में सेम सेम थिंग एज CIRP, रेगुलेशन 22, 24, 25। ये क्या है? ये एक बार देख लेते हैं क्विकली। ये हमारे रेगुलेशंस। 22 क्या है? 22 है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है तो ही हैज टू प्रोड्यूस, ठीक है। सब्सटेंशिएशन, प्रूफ देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रूफ क्या है? तो क्लेमेंट शैल बियर द कॉस्ट ऑफ प्रूफ। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ क्लेम, अगर कोई प्रिसाइज नहीं तो बेस्ट एस्टिमेट कर लेंगे। जो डेट इन फॉरेन करेंसी है उस केस में क्या होगा? वैल्यूड इन इंडियन करेंसी एट द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ठीक है। और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट क्या है? दैट इज द रेफरेंस रेट पब्लिश बाय RBI। पीरियोडिकल पेमेंट्स में the person may claim only for the amounts due and unpaid up to the liquidation commencement date, ठीक है। अगर फ्यूचर टाइम पर पेएबल है, अब फ्यूचर में पेएबल है तो दिस इज द फार्मूला, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस r रेज़ टू द पावर n। भाई सपोज But यू गॉट ए कार फाइनेंस्ड, है ना, EMIs आर पेएबल ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। बट अभी तो आप ये but नहीं कह सकते ना, नाउ द कंपनी इज कमिंग टू लिक्विडेशन, सो यू हैव टू कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अभी yeah. तो आप नहीं बोलोगे ना भाई 5 साल बाद में पेमेंट करूंगा, तो यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। म्यूचुअल क्रेडिट एंड सेट ऑफ एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। चल, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, ठीक है, बिकॉज द लिक्विडेटर हैज द पावर टू रिजेक्ट। तो क्रेडिटर में अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो कहाँ अपील करना है? NCLT को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम्स विद इन 14 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच डिसीजन। रिजेक्टिंग का तो समझ में आ गया प्रदीप जी। Accepting. Yeah. What is एक्सेप्टिंग X? में क्यों, कैसे होगा? एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग के केस में भी में कह क्या रहा होता अपील है कर कि सकते हो। कभी कम हो जाता है, कम कर यस, लेते हैं। हाँ। कभी कम भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जो क्लेम है उसके दो क्लेमेंट्स हैं, उसने दूसरे क्लेमेंट का एक्सेप्ट कर लिया। भाई मान लीजिए फादर था, ठीक है, फादर के नाम फ्लैट था। अब फादर के बजाय और दो उसके बेटे हैं, उसने दूसरे बेटे का एक्सेप्ट कर लिया, जबकि पहले बेटे के पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है या उसके पास विल है या जो भी है ना। तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, भाई उसका क्लेम क्यों एक्सेप्ट कर लिया, मेरा एक्सेप्ट होना था। और इट कुड बी इन केस ऑफ पार्ट एक्सेप्टेंस आल्सो, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम विद इन 14 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच डिसीज, ठीक है।
प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिलेवेंट टाइम। 43, ये 43 to 50 जो है इसको हम अलग से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला अलग से इस पर ना अलग से डिस्कस कर लेंगे इसको। इससे पहले हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को देख लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है ना। और उनको सबको एक ही दिन कर ले। सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि सेक्शन 33 से रेफरेंस चला आ रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है यहाँ पर, पहले तो ये बताइए कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन बी इन फाइनेंशियल क्रेडिटर सिक्योर्ड हो सकता है या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सिक्योर्ड हो सकता है? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर दोनों Operational हो also. सकते हैं। Operational ऑपरेशनल, also can. यस। सो इट कुड बी आइदर ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, इसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, भाई देखो इसके पास तो सिक्योरिटी ऑलरेडी है ही, ठीक है। सो ही में आइदर रिलिंक्विश इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो कह देगा भाई मैं अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश करता हूं एंड रिसीव प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स बाय द लिक्विडेटर इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 53, ठीक है। और रियलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। दो ऑप्शन हैं, या तो वो रिलिंक्विश करेगा या रियलाइज करेगा, ठीक है। ये रेगुलेशन है इसके लिए। अब मान लीजिए वो रियलाइज करता है। अगर वो रियलाइज करता है तो वो क्या करेगा, ही शैल इन्फॉर्म द लिक्विडेटर ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई द एसेट सब्जेक्ट टू सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू बी रियलाइज्ड। अब वो आइडेंटिफाई कर लेगा उस एसेट को कि भाई देखो मैं इस एसेट को रियलाइज करना चाहता हूं, बिकॉज सीडी के पास तो बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। सारे एसेट्स का सिक्योरिटी उसी के पास थोड़ी होगा, है ना। तो जो जिस एसेट का सिक्योरिटी उसके पास है वो उस एसेट को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। सर कौन सा बेटर होता है? नहीं देखिए ऐसा है, बेटर तो दोनों ही हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसको फायदा किस चीज में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि एक फादर है, ठीक है। फादर के पास दो बेटे हैं। अब फादर ने अपनी एक प्रॉपर्टी एक के नाम दे रखी है, बेटे के नाम, ठीक है। और उस फादर के नाम कोई और प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो उस केस में बेटा क्या कहेगा? इन ऑल सर्कमस्टांसेस वो कहेगा देखो जी वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है ना, तो बस ठीक है मौज करो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी तो बेटे के नाम है बट फादर के नाम 10 और प्रॉपर्टीज है। तो वो कहेगा पिताजी ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी भी तो आप ही की है ना। ऐसा करते हैं कि आप ही डिवीजन कर दो प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको उसमें ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है। उसको लग रहा है कि भाई 10 प्रॉपर्टी में से 5 मुझे मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो रिलिंक्विश करेगा या रियलाइज करेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जो सिक्योरिटी उसके पास है उसकी वैल्यू कम है और जो बाकी सिक्योरिटी है कंपनी के पास उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो रिलिंक्विश। अगर उसको लगता है कि भाई उसके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू सफिशिएंट है उसके लोन को रिकवर करने के लिए, तो वो रियलाइज कर ले, है ना। ये तो कॉल उसकी है, उसको देखना है कि क्या बेनिफिशियल। और नॉर्मली तो वो रियलाइज ही कर लेते हैं, रिलिंक्विश तो बहुत कम करते हैं, है ना। Before any security interest is realized by the secured creditor under this section, the liquidator shall verify such security interest and permit the secured creditor to realize only such security interest, the existence of which may be proved. अब लिक्विडेटर भी उस चीज को वेरीफाई करेगा, इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। It could be by way of records of such security interest maintained by an information utility or by such other means as may be specified by the, मतलब ये है कि एनईएसएल के पास उसका रिकॉर्ड है, सरसाई के पास रिकॉर्ड है, एमसीए के पास रिकॉर्ड है। उससे वो वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट इसके नाम है या नहीं, ठीक है। ए सिक्योर्ड क्रेडिटर में एनफोर्स, रियलाइज, सेटल, compromise or deal with the secured asset in accordance with such laws as applicable to the security interest being realized and to the secured creditor and apply the proceeds to recover the rest due to it, ठीक है। वो जो मर्जी करे, एनफोर्स करे, रियलाइज करे, सेटल करे, कॉम्प्रोमाइज करे, जिस तरह से। इफ इन द कोर्स ऑफ रियलाइजिंग ए सिक्योर्ड एसेट
any secured creditor faces resistance from the corporate debtor or any person connected therewith, उसके पास सिक्योरिटी है, अब वो रियलाइज करना चाहता है, यूनियन वाले आ गए, यूनियन वाले बोले देखो हमारा लेबर का पेमेंट नहीं हुआ, तुम ये रियलाइज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे हम। तो वो क्या करेगा, वो ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा रहा है, लिक्विडेटर नहीं लगा रहा एप्लीकेशन। Secured creditor may make an application to the adjudicating authority to facilitate the secured creditor to realize such secured interest in accordance with law for the time being in force. ठीक है। The adjudicating authority, on receipt of an application from a secured creditor under subsection 5, may pass such order as may be necessary to permit a secured creditor to realize security interest in accordance with law for the time being in force. जैसे सरफेसी में होता है, सरफेसी में क्या होता है, सरफेसी में आप डीआरटी को एप्लीकेशन लगाते हो, है ना, तो डीआरटी ऑर्डर देता है, और उसमें भी फिर पुलिस असिस्टेंस या डीएम के असिस्टेंस से होता है काम। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा ये, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है। Where the enforcement of the security interest yields an amount by way of proceed which is in excess of the debt due to the secured creditor। ठीक है, क्या मतलब, मतलब यह है कि उसका लोन था 100 lakhs का, उसको जो रियलाइज हो गया प्रॉपर्टी सेल से 120 lakhs हो गया, तो वो 20 लाख क्या करेगा, अपने पास रख लेगा क्या, नहीं, वो वापस कर देगा लिक्विडिटी। ठीक है। अकाउंट टू द लिक्विडेटर फॉर सच सरप्लस एंड टेंडर टू द लिक्विडेटर एनी सरप्लस फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ सच सिक्योर्ड एसेट्स। ठीक। द अमाउंट, अच्छा एक बात और बता दीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए आपका प्रदीप जी आप बताइए कि देयर इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसका डेट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, उसका डेट है 100 करोड़ का, अब उसको 120 करोड़ रियलाइज हो गए। अब वो ये कह रहा है कि जी मैं तो जो इंटरेस्ट है अप टू डेट ऑफ रियलाइजेशन क्लेम करूंगा, इंटरेस्ट ऑन माई लोन। तो उसको कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन मिलेगा या इंटरेस्ट अप टू लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मिलेगा? Realization date तक it should get, he should get. नहीं, उसको मिलेगा अप टू लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के बाद कुछ नहीं मिलता। इस पर एनसीएलटी का एक केस लॉ है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। Can he उसने क्या get किया, that? उस केस में उसने खुद रियलाइज किया और उतना पैसा अपने पास रख लिया अप टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन, उसको वापस करना पड़ा वो पैसा। Sir, can he get along with the other unsecured creditors that amount at least? ना 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 ना, कुछ नहीं मिलेगा, बस लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक का इंटरेस्ट मिलता, उसके आगे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद नहीं मिलेगा वो। चलिए, ये केस लॉ है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं ग्रुप में वो लिख दूंगा उसको। हाँ, जस्ट अ मिनट। चलिए वो ग्रुप में लिख दीजिएगा, मैं दे दूंगा, एनसीएलटी का जजमेंट है। हाँ जी, सुधाकर जी मैंने एक ग्रुप में शेयर किया था ना, आई होप यू हैव सीन इट दैट जजमेंट। Yes, सुधाकर sir. जी आर Yes, यू sir. देयर? Yes, sir. I am very much here, sir. हाँ, सो आपने देखा था वो जजमेंट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था? ये हमारा ये रिलेटेड पार्टी का बारे में ना सर? नहीं रिलेटेड नहीं, वो जो एनसीएलटी का जजमेंट था कि ही वो लिक्विडेशन, एक ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था ना कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक के ड्यूज लेने हैं या उसके बाद वाले भी लेने हैं इंटरेस्ट, व्हाट विल हैपन टू द हाँ, इंटरेस्ट आफ्टर द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। कोई बात नहीं, आई विल राइट शेयर सर। इट, नो इश्यूज। हाँ जी।
right, ठीक है जी? right. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर है प्रदीप जी, क्लियर है? Yes, yes. So only dues up to the insolvency commencement date, nothing thereafter. The amount of insolvency resolution process, और इसी पर्टिकुलर इसी केस पर ही, इसी सिचुएशन पर ही जजमेंट है। The amount of insolvency resolution process cost due from the secured creditor who realizes their security interest in the manner provided in this section shall be deducted from the proceeds of any realization by such secured creditor, and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation estate. Can you explain me the meaning of this? अजय जी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट नंबर 8? Yes, sir. One sec. पॉइंट नंबर 8 पढ़िए, मेरे को एक्सप्लेन करिए एक बार। The amount of insolvency resolution process costs due from the secured creditors who realize their security interest in the manner provided in this section shall be deducted from the proceeds of any realization by such secured creditors, and they shall transfer such amount to the liquidator to be inducted in the liquidation estate. Actually, this is speaking regarding the CRP cost or liquidation cost, pending liquidation cost. हाँ Uh, देखिए ऐसा this. है, लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन जिसमें सारे ही सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ही नहीं, और सभी बोलते हैं कि भाई हम अपने आप ही रियलाइज कर लेंगे। तो अगर वो सब अपने आप ही रियलाइज कर लेंगे तो लिक्विडेटर कोई गुरुद्वारे थोड़ी जाएगा। लिक्विडेटर ने ये बोला कि भाई आई विल बी चार्जिंग माई फीस ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहे हैं वो तो हम खुद ही कर लेंगे। अरे भाई खुद तो कर लोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं क्या गुरुद्वारे जाऊंगा? वो पेंडिंग कहता सीआरपी है कि कॉस्ट उसको देने होंगे। आप रियलाइज करो तो भी आपको वो पैसा तो देना ही है। मतलब ये है, ठीक है, वो क्योंकि जब वो अपने आप रियलाइज करेंगे तो पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अकाउंट में जाता है। भाई द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी मॉर्टगेज टू हिम, प्रॉपर्टी उसके नाम से मॉर्टगेज है, सारे पेपर उसके पास है, वो चाहे तो सेल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। जब उसने बेच दिया तो पैसा उसके अकाउंट में आएगा, जब पैसा उसके अकाउंट में आएगा तो उसको ही वापस करना पड़ेगा ना लिक्विडेटर को। पॉइंट यहां पर ये है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल में ये है कि सपोज प्रॉपर्टी का वैल्यू है 100 करोड़, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसका मान लीजिए 5% इसको मिलना है लिक्विडेटर को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 100 करोड़ में से इसका शेयर इसको देगा 5। ये नहीं कि वो 100 करोड़ का 100 करोड़ और उसका डेट 100 करोड़ भी है तो भी उसको 5 करोड़ उसको वापस देना पड़ेगा लिक्विडेटर। ये मतलब एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बता दिया कि मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए सारे के सारे ही सिक्योर्ड क्रेडिटर है, फिर तो लिक्विडेटर को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनेट उसका शेयर है वो आप उसको वापस करो। Sir, in general, the liquidation proceeds, how like it will come into a bank account and distributed to creditors or कैसा होता है escrow account? एक्चुअली देर आर टू थिंग्स ना, देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज गॉट ऑप्शन, सिक्योर्ड क्रेडिटर may realize on its own, then it will come into the account of the secured creditor. Otherwise, it will come to corporate liquidation account. A liquidation account is opened where all these things are done. वो लिक्विडेशन अकाउंट खोलते हैं ना, लिक्विडेशन अकाउंट में जाता है पैसा। लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर इफ इज रियलाइजिंग ऑन हिज ओन, सो दैट विल गो टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर बिकॉज द प्रॉपर्टी स्टैंड्स ऑलरेडी मॉर्गेज टू हिम, देन ही विल टेंडर द सरप्लस, वो वापस कर देगा उसको लिक्विडेटर। Where the proceeds of the realization of the secured assets are not adequate to repay debts owed to the secured creditor, the unpaid debts of such secured creditor shall be paid by the liquidator in the manner specified in clause E of subsection 1 of section 53. तो क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53 क्या बोलता है? ये बोलता है, ये ई का 1, अमाउंट ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट for the period of 2 years preceding the liquidation commencement date, and debts owed to secured creditor for any amount unpaid following the enforcement of security interest. ठीक है, इनका पेरी पैसे चार्ज हो जाएगा। Actually, I was discussing this only, sir. हाँ, I was discussing the unpaid interest. So whether he can take under this 53 E2. no, only interest up to liquidation commencement date he can take, not That only. Okay.
But suppose his debt was 100 and he could realize only 80 out of the realization of the asset. So for 20 still has he has to claim. तो वो यहां पर क्लेम करेगा 53(1)(e)(2) में। अगर बचेगा तो सर उसको मिलेगा इसमें। हाँ बचेगा तो नेचुरली, ये तो है। चलिए नाउ 53 क्या बोलता है? 53 बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम। सबसे पहले क्या देना है आपको? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर ही खत्म हो गया और पैसा है ही नहीं, बस फिर किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट। सेकंड क्या होगा? फॉलोइंग डेट्स विच शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग। वर्कमैन ड्यूज होंगे फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। अब वर्कमैन क्या है? वर्कमैन आपका डिफाइंड है ना? वर्कमैन की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में पढ़ा ना हमने वर्कमैन की डेफिनेशन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 36। तो वर्कमैन की डेफिनेशन आपको देखनी है क्लॉज एस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये वर्कमैन हो गए, इनके 24 मंथ्स के ड्यूज। एंड डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जिसने रिलिंक्विश किया उसको यहां पर उसको प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। जिसने रिलिंक्विश नहीं किया वो फिर नीचे आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आया? वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन। ऊपर वर्कमैन क्या आ गए? वर्कमैन के अलावा जो एम्प्लॉइज हैं उनके ड्यूज कितने? 12 मंथ्स के प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। अच्छा मान लीजिए एम्प्लॉयज के ड्यूज हैं फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, तो बाकी के ड्यूज का क्या होगा? भाई 24 मंथ्स के तो यहां पर दे दिए, बाकी के 36 मंथ्स का क्या होगा? वो बाकी 36 मंथ्स आपके जाएंगे एफ पॉइंट में, एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। तो कुछ बचा तो वहां मिलेगा, हाँ बचेगा ही नहीं सर। हाँ। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का 12 मंथ्स का तो यहां हो गया, 12 मंथ्स के बियॉन्ड है तो वो फिर रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में जाएगा। वो चाहते हैं ना भाई सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, ऐसा नहीं एक को मिले सारा, है ना। उसके बाद में आ गया आपके फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अभी तक आप देखिए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिला ऊपर से, है ना। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कब मिल रहा है? या तो वो सिक्योर्ड है तो मिल जाएगा अगर उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया, या फिर वो वर्कमैन या एम्प्लॉयज है तो मिल जाएगा, है ना। बाकी जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको अभी तक कुछ नहीं मिला जब तक कि वो सिक्योर्ड नहीं है। अगर वो सिक्योर्ड है और उसने रिलिंक्विश कर दिया तो ऊपर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में एनी अमाउंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट and debts owed to secured creditor for any amount unpaid following the enforcement of security interest। और उसके बाद में मिल गया any remaining debts and dues। तो अगर मान लीजिए देयर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और वो अनसिक्योर्ड है, सिक्योरिटी तो इंटरेस्ट उसको यहाँ उसके पे पास कोई मिलेगा नहीं है, एफ में। वो एफ पॉइंट में आएगा, है ना। और उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स, ठीक है। Any contractual arrangements between recipients under subsection 1 with equal ranking, if disrupting the order of priority under that subsection, shall be disregarded by the liquidator. The fees payable to the liquidator shall be deducted proportionately from the proceeds payable to each class of recipients under subsection 1, and the proceeds to the relevant recipient shall be distributed after such deduction। क्योंकि हमने एक चार्ट देखा था लिक्विडेटर का, है ना, कि ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिलेशन, तो हर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब उसको पैसे उसमें से लिक्विडेटर वाला पास काट लेंगे वो, ठीक है। It is hereby clarified that at each stage of distribution of proceeds in respect of a class of recipients that rank equally, each of the debts will either be paid in full or will be paid in equal proportion within the same class of recipients if the proceeds are insufficient to meet the debts in full। And the term workman dues shall have the same meaning as assigned to it in section 326 of the Companies Act। तो वर्कमैन ड्यूज का क्या मतलब है? जो आपको सेक्शन 326 में दे रखा हो, ये हमने 326 नीचे दे दिया है कि वर्कमैन ड्यूज का मतलब क्या। उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। अब मान लीजिए लिक्विडेशन हो गया, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद में क्या होगा?
कि डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। वेयर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव बीन कंप्लीटली लिक्विडेटेड, द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर, and the adjudicating authority shall, on an application filed by the liquidator, order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order, and the corporate debtor shall be dissolved accordingly. फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। And a copy of an order shall within 7 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the corporate debtor is registered, ठीक है। आरओसी। हाँ, उसके बाद में आपके ये टाइमलाइन से कुछ, ठीक है। ये रेगुलेशन नंबर 47। तो लिक्विडेशन प्रोसेस कुछ रेगुलेशंस भी पढ़ लेते हैं, है ना। जो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स वगैरह है वो वाला काम हम करेंगे मंडे को, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक तो ये है कि बुक्स का क्या मतलब है। बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या उन दोनों में भी डिफरेंस है। बुक्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर मींस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as defined in section 2 subsection 13 and section 2 subsection 40 of the Companies Act. Books of account as referred to in section 34 of LLP Act, or the books of account as specified under the applicable law, ठीक, as the case may be. कंसल्टेशन कमेटी क्या है, मींस द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। लिक्विडेशन कॉस्ट, फीस पेएबल, रेम्यूनरेशन पेएबल वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और बता दीजिए बिफोर वी मूव फर्दर। एक बार लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो क्या इसमें विड्रॉल विड्रॉल का भी कोई प्रोविजन है क्या, वेदर लिक्विडेशन प्रोसेस कैन बी विड्रॉल, जैसे सीआईआरपी में विड्रॉल का प्रोविजन है। नहीं सर। लिक्विडेशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। ऐसा है, कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। अब सीओसी को क्या लग रहा है, या लिक्विडेटर को क्या लग रहा है कि भाई कंपनी के पास लिक्विडेटर को देने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यस। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, उस यूसी सिचुएशन से ही में वो ये मांगेगा सर। कहेगा कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ही विल आस्क देम टू कंट्रीब्यूट। The liquidator shall call upon the financial creditors, being financial institutions, to contribute the excess of the liquidation cost over the liquid assets. भाई लिक्विड एसेट्स क्या है, कैश एंड मार्केटेबल, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर मान व्हाट लीजिए इज लिक्विड एसेट्स है उसके 2 करोड़ के और लिक्विडेशन कॉस्ट आ रही है 10 करोड़, तो उसको तो सामने नजर आ रहा है ना कि भाई लिक्विडेशन कॉस्ट भी मीट नहीं होगी। तो उस केस में क्या कहेगा वो, ही विल आस्क दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कंट्रीब्यूट। अब वो कहेंगे भाई हम क्यों कंट्रीब्यूट करें, हमारे को क्या फायदा। तो वो कहेगा भाई देखो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, जो भी आरबीआई रेट्स है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपको वो ये इंश्योर कर लेगा शुरू में ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि लिक्विडेशन शुरू कर दे बाद में लिक्विडेटर की भी कॉस्ट ना पूरी हो पाए। इसीलिए पहले वो कह देगा भैया आप ये डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दो, कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days ऑफ द पासिंग ऑफ द लिक्विडेशन ऑर्डर, ठीक है। और ये जो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है इट शैल बी रिपेबल विद इंटरेस्ट एट बैंक रेट स्पेसिफाइड इन रेफर टू इन सेक्शन 49 एज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडेशन। सर, इंटरेस्ट शायद कंपलसरी नहीं है। हाँ जी, इंटरेस्ट आई थिंक कंपलसरी नहीं है, आई थिंक। नहीं लिखा है शैल बी रिपेबल, लिखा है ना पॉइंट नंबर 3 पे, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा इसको। नॉर्मली हम लोग लेते हैं बट इंटरेस्ट नहीं देते हैं। नहीं वो ठीक है, वो एक अलग बात है, बट ये इसमें ये लिखा। अच्छा, नाउ 2B, 2B क्या बोलता है, 2B बोलता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। देखिए ऐसा है कि लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसॉर्ट, है ना। तो लिक्विडेशन में भी कोशिश करते हैं कि भाई द कंपनी में भी सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो जाए, है ना। तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज्ड है तो इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। Provided that a person who is not eligible under the code to submit a resolution plan shall not be a party in any manner to such compromise or arrangement.
वो 29A वाली इलिजिबिलिटी यहाँ पर भी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिक्विडेटर shall file the proposal of compromise arrangement only in cases where such a recommendation has been made by the committee. Provided further that the liquidator shall not file such proposal after the expiry of 30 days from the liquidation commencement date. तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रपोज किया था सीओसी ने, तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर ये करना है। और ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये कंप्लीट होना चाहिए कितने दिन में? 90 डेज। ठीक है। द टाइम टेकन ऑन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज shall not be included in the liquidation period, क्योंकि लिक्विडेशन का भी पीरियड है ना, कि लिक्विडेशन भी आपको 1 ईयर में कंप्लीट करना है एज पर लेटेस्ट रेगुलेशंस। अगर हम लेटेस्ट रेगुलेशंस देखें तो रेगुलेशन क्या 42 है, कौन सा है? ये 330 डेज में कंप्लीट करना है सर? नहीं सर, हाँ 44 है, वन ईयर। अभी चेंज हो गया ना ये, 2 year. हाँ अभी हो गया ये 1 ईयर। 1 ओके। रेगुलेशन 44 ऑफ लिक्विडेशन रेगुलेशन। चलिए, any cost incurred by the liquidator in relation to compromise or arrangement shall be borne by the corporate debtor where such compromise or arrangement is sanctioned। देखो, जो भी compromise या arrangement की स्कीम है, अगर वो सैंक्शन हो जाए तो सीडी विल बेयर इट, और अगर सैंक्शन नहीं होती तो एप्लीकेंट विल बेयर इट। ठीक है, बस। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, रेगुलेशन 3। An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a liquidator if he and every partner or director of the insolvency professional entity of which he is a partner or director is independent of the corporate debtor। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इसको अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहें तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो पहले तो ये देख। ठीक है, a person shall be considered independent of the corporate debtor if he is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate debtor। तो आपको सेक्शन 149 में देखना होगा कि जो भी कंडीशंस है, जैसे केएमपी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है वगैरह, वो सब अपॉइंट नहीं हो सकते, है ना। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है 149 में। इफ ही इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर of a firm of auditors or secretarial auditors, cost auditors of the corporate debtor, or of a legal or consulting firm that has or had any transaction with the corporate debtor contributing 10% or more of the gross turnover of such firm in the last 3 financial years। ठीक है, क्या मतलब? और ये जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है, ये किस पर एप्लीकेबल है? ये पॉइंट नंबर सी पर एप्लीकेबल है। ठीक है, suppose there is a legal or consulting firm, this person, this insolvency professional is running a legal or consulting firm also, and the turnover of his firm is say 100 lakhs, and out of 100 lakhs he is getting more than 10% or more। ठीक है, suppose he is getting 20 lakhs from this CD also, है ना, तो उस केस में क्या होगा? he cannot be appointed as liquidator। 10% और मोर अगर वहां से मिल रहा है उसी सीडी से जिसका ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है तो नहीं हो सकता। ठीक है, हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स और सेक्रेटरी ऑडिटर्स, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और ऑफ ए लीगल और कंसल्टिंग, मतलब वो जो कंसल्टिंग फर्म है उसका एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर या पार्टनर भी नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, a liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate debtor or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it to the board and the adjudicating authority। ठीक है, अगर उसका कोई भी पेक्यूनरी या पर्सनल रिलेशनशिप है उसको डिस्क्लोज करना है। An insolvency professional shall not continue as a liquidator if the insolvency professional entity of which he is a director or partner
or any other partner or director of such IPE represents any other stakeholder। ठीक है, अब इसी के साथ में हम डिस्क्लोजर वाले प्रोविजंस भी देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा ना ये ही शैल डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस, तो ये डिस्क्लोजर वाले प्रोविजंस आपको कहाँ मिलेंगे? ये कोड ऑफ कंडक्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बार कोड ऑफ कंडक्ट पर भी चलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट पे जाके ना वहां से देख लेते हैं, ये आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस में मिल जाएंगे। हम्म, ये है जो रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस। क्या कहता है ये कहता है एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप with any of the stakeholders entitled to distribution under section 53 or 178 of the code, and the concerned corporate person data as soon as he becomes aware of it। तो उसको ये डिस्क्लोज करना by making a declaration of the same to the applicant, committee of creditors and the person proposing appointment as applicable। ठीक है, an insolvency professional shall disclose as to whether he was an employee of or has been in the panel of any financial creditor of the corporate debtor to the committee of creditors। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो जिसको हम लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, ये क्या है? सपोज ये बैंक का एम्प्लॉय था। ठीक है, तो उस केस में इसको डिस्क्लोज करना है। और हैज बीन इन द पैनल ऑफ एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल डिस्क्लोज इट्स रिलेशनशिप, वो भी कितना? वो भी 3 साल, जैसे वहां पर लिख दिया ना 3 साल, है ना। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल डिस्क्लोज इट्स रिलेशनशिप इफ एनी with the corporate debtor, other professionals engaged by it, financial creditor, interim finance provider, and prospective resolution applicants to the insolvency professional agency of which he is a member। जिस भी आईपीए का मेंबर है उसको ये डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अगर आईपी मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड है ना, तो विद इन 3 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इफ इज रिलेटेड विद द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लीगल प्रोफेशनल्स, है ना, विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। तो ये सारी इसको रिलेशनशिप डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, तो ये और रिलेशनशिप क्या है ये भी इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप में क्या है ये देखिए, वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल एज द केस में बी has derived 5% or more of his or its gross revenue in a firm from professional services to the related party। तो यहाँ 5% की कंडीशन है। Where the insolvency professional or the other professional as the case may be is a shareholder, director, KMP or partner of the related party। Where a relative, spouse, parents of spouse, sibling or self and spouse of the IP or other professional as the case may be has a relationship। Where the insolvency professional as the case may be, ये सारी इन सब केसेस में आपको ये रिलेशनशिप डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, चलिए, ये आपका एडिशनल डिस्क्लोजर है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आपके आ जाता है। फर्स्ट शेड्यूल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, चलिए, अब दोबारा हम वहीं पर चलते हैं अपने प्रोविजन पर। लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन, यहां पर थे हम लोग, है ना।
ठीक है जी। तो अगर कोई आपकी पेक्यूनियरी या पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो आप डिस्क्लोज कर दोगे। कहां पर देखोगे आप ये बात? देखोगे आप शेड्यूल में, कोड ऑफ कंडक्ट। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये हो ही गया। लिक्विडेटर फीस, फीस वाला प्रोविजन हमने पहले ही देख लिया था। सबसे पहले तो सीओसी हो सकता है डिसाइड कर ले। सीओसी अपनी लास्ट मीटिंग में पूछ लेती है कि भाई अगर आप लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए तो कितनी फीस लोगे। वो कहाँ लिखा हुआ है? रेगुलेशन 39D में, अब सीआईआरपी रेगुलेशन। नहीं तो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी फिक्स कर देगी, और वो भी नहीं तो फिर ये चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से हो जाएगा। ये मिलेगा आपको दोनों पर, रियलाइजेशन पर भी और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी। मान लीजिए कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड के रियलाइजेशन पर भी पैसा मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा? क्या कैश इन नहीं बैंक है? सर, नहीं सर, वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है एक्चुअली। हाँ, वो ऑलरेडी रियलाइज है। उसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर मिलेगा, रियलाइजेशन पर नहीं मिलेगा। अब इसमें क्लैरिफिकेशन लिखा है। क्या क्लैरिफिकेशन लिखा है? क्लैरिफिकेशन में ये लिखता है कि वेर ए लिक्विडेटर रियलाइजेज एनी अमाउंट बट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सेम। ऐसा भी हो सकता है ना, रियलाइज उसने किया, डिस्ट्रीब्यूट किसी दूसरे ने किया, क्योंकि लिक्विडेटर में ऑल्सो भी रिप्लेस्ड है ना। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी उसको भी रिप्लेस कर सकती है। तो उस केस में ऐसा होगा कि रियलाइजेशन के टाइम पर ए लिक्विडेटर था, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर भी है, तो वो फिर उसको उतना ही मिलेगा जितना रियलाइजेशन। ठीक है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लिक्विडेटर। रिपोर्टिंग, क्या क्या चीजें इसको प्रिपेयर करनी है? एक तो इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, एसेट मेमोरेंडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, सेल रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन, और उसको शेल प्रिजर्व फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉपी फॉर 8 years। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है। ये है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या होगा? सबसे पहले इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी कितने दिन में? 75 डेज। क्योंकि 30 डेज में तो देखो इसके पास क्लेम आएंगे, है ना। 30 डेज इसको वेरिफिकेशन में लगेगा, फिर 14 डेज में कोई अपील भी कर सकता है, 7 दिन के अंदर इसको बताना है। तो 75 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट इसको क्या है? एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनानी। उसमें क्या क्या बताएगा ये? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द सीडी, estimate of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate debtor। ठीक है। उसको लगता है कि बुक्स आर नॉट रिलायबल, तो फिर वो एक जो भी रिलायबल डेटा या रिकॉर्ड्स है उसके बेसिस पर वो बता देगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, बुक्स भी फर्ज है, भाई बुक्स में प्रॉपर है ही नहीं। जो क्रेडिटर बुक्स में दे रखे हैं वो क्रेडिटर एक्चुअल में नहीं है, जो डेटर बुक्स में दे रखे हैं वो डेटर है ही नहीं, है ना। जो फेक इनवॉइसिंग वगैरह वाला केस है, या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, है ना। या फिक्टिशियस बिलिंग कर रखी है कंपनी ने, परचेजिंग बोगस परचेज बुक कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा? क्लेम तो आएगा नहीं आपके पास। अगर क्लेम आएगा तो वो GSTR 1 GSTR 3 भी वो सब कुछ दे नहीं पाएगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएगा प्रॉपर, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि वो फिर मान लेगा भाई बुक्स रिलायबल नहीं है, वो फिर क्लेम्स के बेसिस पे या और चीज जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वो क्या करेगा? एस्टिमेट बना देगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। इसी स्टेज पर उसको ये बताना है कि भाई उसको कुछ गड़बड़ लग रही है क्या बुक्स में, whether he intends to make any further inquiry into any matter relating to the promotion, formation or failure of the corporate debtor or the conduct of the business thereof। ठीक है। And the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation cost। कितने टाइम में लिक्विडेशन कंप्लीट कर लेगा और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होगी, ये सारी बातें उसको कहां बतानी है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। कितने दिन के अंदर देनी है उसको? विद इन 75 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कंपनी में कुछ जान ही नहीं है, तो फिर अर्ली डिसोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन पहले उसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो बनानी ही बनानी है। क्या कहता है? एनी टाइम आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। उसने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना ली,
उसको लगता है कि भाई द रियलाइजेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा आर इनसफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस। कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी लिक्विडेशन प्रोसेस की, और फिर कोई गड़बड़ भी नहीं है। द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या करेगा? ही शैल कंसल्ट द कंसल्टेशन कमिटी, and if it advises for early dissolution, he may apply along with a detailed report incorporating the views of the consultation committee। ये जो रेड में मार्क्ड है ना, ये नए सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस रिस्पेक्ट ऑफ सच डिसोल्यूशन। तो क्या करेगा? कंसल्टेशन कमेटी से पूछ लेगा और डिटेल्ड रिपोर्ट देगा, उनके व्यूज को भी इनकॉर्पोरेट इसमें कर लेगा। ठीक है, ये तो हुई हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। उसके बाद में इसको क्या करना है? इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है। द लिक्विडेटर शैल सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इन द फॉर्मेट स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द बोर्ड एज अंडर। पहली रिपोर्ट कब देनी है उसको? विद इन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच इज अपॉइंटेड। ठीक है, ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है। फिर सब्सिक्वेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं विद इन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ड्यूरिंग विच ही एक्ट्स एज लिक्विडेटर। लेकिन मान लो उसकी अपॉइंटमेंट बीच में ही खत्म हो गई, तो फिर जिस दिन जो डेट ऑफ सेशन है ना, उसके 15 days के अंदर उसको रिपोर्ट देनी है। ठीक है, अगली रिपोर्ट दूसरा देगा। इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा? ए प्रोग्रेस रिपोर्ट शैल प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू लिक्विडेशन फॉर द क्वार्टर इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन including settlement of list of stakeholders, details of any property that remains to be sold and realized, ये क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेकहोल्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड प्रॉपर्टी मेड टू स्टेकहोल्डर्स, डिटेल्स ऑफ फीस और रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग द फीस ड्यू टू एंड रिसीव्ड बाय द लिक्विडेटर टुगेदर विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय हिम। फीस कितनी ली और काम कितना किया। द रेम्युनरेशन और फीस पेड टू प्रोफेशनल्स appointed by the liquidator together with the description of activities carried out by them, other expenses incurred by the liquidator whether paid or not। ठीक है, मतलब accrual basis, developments in any material litigation by or against the corporate debtor, filing of and development in applications for avoidance of transactions under part 2 of the code, and changes if any in estimated liquidation। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे वो देखेगा कि भाई कोई अब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसने पहली रिपोर्ट में बताई थी, क्या उससे चेंज तो नहीं हो रही। ठीक है, ए प्रोग्रेस रिपोर्ट शैल एनक्लोज एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय द लिक्विडेटर शोइंग हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स सिंस द लिक्विडेशन कमेंसमेंट। क्वार्टरली और क्यूमुलेटिव दोनों। A progress report shall enclose a statement indicating any material change in expected realization of any property proposed to be sold along with the basis for such change। मतलब जो जैसे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में उसने बताया था कि भाई ये प्रॉपर्टी 100 करोड़ की बिक जाएगी, बाद में उसको लगता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, है ना, तो वो एक्सपेक्टेड रिलेशन में जो चेंज है वो भी बता देगा अगर कोई मटेरियल चेंज है, अलॉन्ग विद बेसिस ऑफ सच चेंज। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द फोर्थ क्वार्टर के साथ में आपको ऑडिटेड अकाउंट्स भी लगाने हैं, ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, प्रोवाइड दैट इन केस एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सीजेस टू एक्ट एज लिक्विडेटर, तो वो अपने पार्ट के जो है रिसीट एंड पेमेंट लगा देगा। ठीक, ये इसमें इलस्ट्रेशन दिया है। भाई सीधी बात है, 15 दिन जो फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर है, लेकिन अगर बीच में है तो उसके 15 दिन बाद हो जाएगा, सीधी बात है ना। जैसे 12 फरवरी तक उसका टेन्योर है, मान लीजिए 13 फरवरी से दूसरा लिक्विडेटर आ गया, तो ये अपना ऑडिट वगैरह करवा करके उसको 27 फरवरी को दे देगा, ये मतलब। ठीक, क्लेम्स, सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ये कल कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे ना। ठीक है सर। तब तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर लिक्विडेशन से रिलेटेड जो भी है ना, मैं आपको केस स्टडीज भी शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा इन द मीन टाइम, है ना। और जो पर्टिकुलरली रेड में मार्क किया हुआ है ना, उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि रेड वाला जो है वो हमारा चेंज है और उस पर वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप में पता नहीं क्यों नहीं पूछते, ज्यादा पता नहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या रीजन है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसीलिए हम भी स्लो स्लो चल रहे, ज्यादा तेज नहीं चल रहे, ताकि समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि समझ में ना आए और हम आगे चलते रहे तो कुछ। बट मेरे को लगता है कि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उतना तो समझ में आ ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं। हाँ। क्योंकि एक बार स्पीड पकड़ लेंगे ना, फिर तो उसके बाद में हम तेजी से